Hello dear students, welcome back to our class. In first lecture we discuss about motion and distance and displacement and difference between the distance and displacement, and we see the speed. Now today's lecture we study velocity. So velocity denoted by letter V. So velocity means a object a displacement of an object produced displacement in unit time. So the formula of velocity is displacement upon time. So SI unit of velocity is डिस्प्लेसमेंट का यूनिट जो होता था वो मीटर होता था, टाइम का यूनिट सेकंड. सो एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड. हियर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी. जो स्पीड थी वहां पे डायरेक्शन हम इंडिकेट नहीं करते थे कि कोई भी कार और कोई भी ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में इतनी स्पीड से वो मोशन कर रहा है. लेकिन वेलोसिटी में क्या है, ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस अ डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. डिस्प्लेसमेंट क्या थी, वेक्टर क्वांटिटी. सो वेलोसिटी इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. Vector is, velocity is a वेक्टर क्वांटिटी. तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब कोई ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर मोशन में, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, जब इस डेफिनेशन दूसरी लिखते हैं, इन ऑब्जेक्ट मोशन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड इट कवर अ डिस्टेंस इन यूनिट टाइम. तो इधर क्या वर्ड आएगा, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन. तो हम डिस्प्लेसमेंट इधर लिखते हैं. डिस्प्लेसमेंट को हमको पता ही है कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो उसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो कितना डिस्प्लेस हुआ वो हमको दिखाता है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया. So simple definition, object produce a displacement in a unit time. So vector is velocity is a vector quantity. Now velocity is a vector quantity, so it is also direction. तो हम कैसे लिखेंगे, सपोज कि कोई ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकंड की तरफ मोशन में है, 20 मीटर पर सेकंड वो डिस्टेंस कवर कर रहा है. तो हम क्या लिखेंगे, इतना लिखेंगे नहीं, तो उसके साथ लिखेंगे हम इन नॉर्थ डायरेक्शन. कोई भी डायरेक्शन होगी. अभी एग्जांपल के लिए सपोज कि ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन है, तो कोई ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, तो आफ्टर सम टाइम इट इज इन हियर. सो वी विल फाइंड आउट अ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. तो इसने जितना डिस्प्लेसमेंट किया और उसके लिए जो उसको टाइम लगा होगा, हम दोनों का डिवाइड कर देते तो हमको मिलेगी वेलोसिटी. तो कौन सी डायरेक्शन में मिली, नोट है. सपोज कि इस डायरेक्शन में होता तो हम इस डायरेक्शन लिखते हैं इधर. तो वेलोसिटी में डायरेक्शन इंडिकेट करना कंपलसरी है.
So how to change the value of velocity और यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसको कहेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मीनिंग क्या होगा कि जो वेलोसिटी ट्रैवल करेगा ऑब्जेक्ट, जो डिस्प्लेस करेगा, वो जो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होगा वो इक्वल होगा, तब हमको जो वेलोसिटी मिलेगी वो कितनी मिलेगी? इक्वल मिलेगी। सपोज कि ये मेरा पॉइंट ए है और पॉइंट बी, जो डिस्टेंस ए से बी जो डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेसमेंट की बात करें, सपोज कि ये डिस्टेंस था टोटल 10, यहाँ पे 20 और 30। जो टाइम इंटरवल उसमें था 10 के लिए वो कितना था? तो 1 सेकंड। इसमें कितना था? 1 सेकंड और इसमें भी 1 सेकंड। और डिस्टेंस ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन, जब ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन देन इट्स स्पीड एंड इट्स velocity both are equal when it's travel in a straight line only। तब इसको हम कर्व कर देंगे तब वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि तब हम क्या करेंगे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और उसका हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तब वो चेंज हो जाएगा। हमने क्या किया? ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन, इफ ऑब्जेक्ट travel in straight path, then its speed and velocity both are equal, both are equal only in straight path। सपोज कि अभी ये ऑब्जेक्ट था, इसने यहां से यू टर्न ले लिया, वापस चला गया 30 से, जो मेरा था वो इनिशियल पोजीशन, पहले केस में किया था फाइनल पोजीशन 30। नाउ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन बोथ आर सेम, फाइनल पोजीशन। सो वेलोसिटी हमें कितनी मिलेगी? इधर v इज इक्वल टू, पहले स्पीड फाइंड आउट करते हैं। स्पीड डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट 30 प्लस 30 60, टाइम रिक्वायर्ड 3 सेकंड, तो स्पीड कितनी हुई? 20 मीटर पर सेकंड। 60 डिस्टेंस टोटल 10 10 10 30, सॉरी 6 सेकंड आएगी, तो स्पीड होगी कितनी? 10 मीटर पर सेकंड। नाउ इफ यू फाइंड वेलोसिटी v, सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम। तो फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन बोथ आर एट सेम पॉइंट, सो इट इज 0 एंड टाइम इज 6 सेकंड, सो वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकंड। बिकॉज जो ऑब्जेक्ट था वो वापस चला गया, इनिशियल पॉइंट पे आ गया, सो वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकंड। सो ऐसा यूनिट जो होता है वो क्या होता है? वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। If we calculate for a larger value, then the unit is kilometer per hour, and calculate for smaller value, then centimeter per second. Now, if object, now non-uniform velocity का meaning क्या होगा? Non-uniform velocity. So there are two conditions. First one is a
displacement by time interval is changed. Displacement covered in unit time change, or second thing, the direction of the velocity is changed. If displacement velocity is constant, means the speed velocity, if direction of object change, if direction is changed, then also a velocity is changed, because here इधर हम लिखते हैं कि इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन और वेस्ट डायरेक्शन कोई भी, तो इसमें क्या होगा कि सपोज कि मान लीजिए कि कोई सर्कुलर मोशन है और वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो ट्रैवल कर रहा है वेलोसिटी से, यहाँ पे भी 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर, बट एवरी पॉइंट क्या कर रहा है, उसकी डायरेक्शन चेंज करे, इधर वो टूवर्ड द कौन सी डायरेक्शन में था, वेस्ट डायरेक्शन में, यहाँ पे वो साउथ में आ गया, इधर ईस्ट में आ गया, इधर नॉर्थ में, तो डायरेक्शन चेंज करे तो वेलोसिटी कैसी होगी, नॉन यूनिफॉर्म. नाउ एवरेज वेलोसिटी, average velocity is denoted by AV. So average velocity means final velocity minus, sorry, average velocity means total displacement by total time. Total displacement covered by an object in total time interval. So AV means total displacement, means displacement is denoted by S, and total time interval is T. Sorry, here average velocity V average. Now, if velocity is continuously changed, it's called the rate of change of velocity. Then we will get another physical quantity is known as the acceleration. Acceleration का मीनिंग क्या होता है? इट इज डिनोटेड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. द रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity with respect to time. Acceleration is denoted by letter A, so A is equal to V by T. So SI unit of velocity is meter per second and unit of time is second. So SI unit of acceleration is meter per second square,
or it is written down like meter second minus 2. तो एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या होता है? सपोज कि हम कोई कार लेके जा रहे हैं, हम जब स्टार्ट करते हैं तब उसका स्पीडोमीटर में हम देखते हैं कि स्पीड कितनी होती है, 0। आफ्टर सम टाइम हम धीरे धीरे कार की स्पीड को इंक्रीज करते हैं, स्पीड को हम बढ़ाते हैं। सो उसकी वेलोसिटी में चेंज होगा, वेलोसिटी में चेंज होगा तो उसके एक्सेलरेशन में भी चेंजेस आएंगे। और सपोज कि आप रोड पे जा रहे हो, कहीं पे कोई रेजिस्टेंस आ गया, मीन्स कि बम्प आ गया और कहीं पे रोड खराब है, तो आप क्या करेंगे? आप कार की स्पीड को हम क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे। जब हम डिक्रीज करेंगे तो उसको हम बोलेंगे डी एक्सेलरेशन। मीन्स कि उसमें क्या होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वो डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी क्या हो रही है उसकी? डिक्रीज हो रही है। तो एक्सेलरेशन किस पे रिलेटेड है? तो कि वेलोसिटी पे। जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी, वेलोसिटी इंक्रीज, तब एक्सेलरेशन, वेलोसिटी डिक्रीजिंग, deceleration. If velocity is constant, then what happens? If velocity is a constant, then acceleration is 0. Velocity is a constant, then acceleration is 0. Example कितना समझते कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब वेलोसिटी, तो आप कोई कांस्टेंट स्पीड से आप जा रहे हो, सपोज कि आप कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हो, कि टाइम इधर हम डिनोटेट करते हैं 1 2 3 4 5 6 0। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा? ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। सपोज कि इनिशियल वेलोसिटी एट 0 पॉइंट पे 20 मीटर पर सेकंड थी, 20 मीटर पर सेकंड। जब हमने ऑब्जर्व किया कोई कार को, तो वो कुछ 20 मीटर पर सेकंड स्पीड से वो मोशन में थी। नाउ आफ्टर सम टाइम व्हेन वी ऑब्जर्व हियर, then also the speed of car is 20 meter per second. जो velocity is 20 meter per second. So here calculate if final velocity कितनी थी? 20 मीटर पर सेकंड। इनिशियल कितनी थी? 20 मीटर पर सेकंड। और जो टाइम था वो कितना था? 4 सेकंड। लेकिन 20 minus 20 is equal to 0. So answer is acceleration is 0. Now if we consider the final velocity is 60, धीरे धीरे कार की स्पीड जो है वो इंक्रीज हो रही है। जब हमने पहले नोटिस किया तो उसकी जो स्पीड थी वो 20 मीटर पर सेकंड थी, एंड आफ्टर सम टाइम व्हेन वी ऑब्जर्व द स्पीड ऑफ द कार इज 60 मीटर पर सेकंड। सो हियर फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई? 60। इनिशियल कितनी थी? 20 मीटर पर सेकंड। सो नाउ 60 minus 20, 40 मीटर पर सेकंड। जो टाइम था वो तो सेम ही है, 0 से 4 सेकंड। टाइम इन सेकंड, तो सेकंड डिवाइड बाय 4। तो एक्सेलरेशन हमको मिला, वो कितना मिला? उसको हम 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 मीटर पर सेकंड। नाउ अगेन if we observing
पॉइंट अगेन, सपोज कि इनिशियल में जो एक्सेलरेशन था वो कुछ 80 था, 80 मीटर पर सेकंड, एंड when driver see here some object placed on road, so he decrease this car, so here the speed is 20 meter per second. So we will find out the acceleration. Final velocity 20, initial velocity 80, 20 minus 80 minus 60, minus 60 divided by 4, minus 60 divided by 4 means 15 meter per second, here negative sign. If answer acceleration answer is we will get in negative, then it is called deceleration. उसका जो वेलोसिटी था वो क्या हुआ, कम हुआ, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, तो उसको हम बोलेंगे डीएसेलरेशन, डीएसेलरेशन. नाउ कांस्टेंट एक्सेलरेशन हमको कब मिलेगा, जब कंटिन्यूसली टाइम इंटरवल पे स्पीड बढ़ रही है. सपोज कि बॉल इज फॉलिंग फ्रॉम एन टॉलर बिल्डिंग, जब हम कोई भी बड़ी हाइट वाली बिल्डिंग होती है वहां से हम जब कोई भी बॉल को नीचे फेंकेंगे तो उसमें जो वेलोसिटी होती है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है, उसमें वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है. सपोज कि एक हाई राइज बिल्डिंग है और वहां से हम कोई एक बॉल को नीचे थ्रो करते हैं तो वो इस तरह से नीचे आएगा, तो उसमें क्या होगा, कंटिन्यूसली उसमें वेलोसिटी में इंक्रीज होगा. तो कंटिन्यूसली जो इंक्रीज होगा तो टाइम इंटरवल होगा, तो हम दोनों का जो फाइंड आउट करेंगे रेशियो, तो वो कितना मिलेगा, इक्वल. तो हम कहते हैं कि वो एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट. जब वेलोसिटी में कांस्टेंट इंक्रीमेंट आता है तब. इसी तरह डीएसेलरेशन भी कांस्टेंट होता है कि जब हम गेंद को हवा में ऊपर की तरफ, इधर हमने जो एयर का रेजिस्टेंस था वो हमने नेग्लिजिबल किया, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब होगा, अगेन वन, क्या कोई भी बॉल थ्रो करते हो तो जो उसकी वेलोसिटी में जो इंक्रीमेंट होता है वो कांस्टेंट ही रहता है, जो इंक्रीमेंट होता है वो एडिशनली कांस्टेंट रहता है, तब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हमारा रहेगा. Now, in next lecture, we further study the physical quantity, displacement, velocity and acceleration in the graphical form. ग्राफ के अंदर हम उसका स्टडी करेंगे. थैंक यू.